हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजेश गुलेरिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईटेक व्यू में। डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर अवेयरनेस MCQ सीरीज का ये 7th वीडियो है जिसमें हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के MCQs कवर कर रहे हैं और जिसका ये सेकंड पार्ट है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उन्हें ज़रूर देखें। इन सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शंस में डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट अस स्टार्ट विथ द क्वेश्चन इज which of the following terms define the technological advancement in the field of computers through the ages? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्मों से कंप्यूटर के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए ग्रोथ, ऑप्शन बी ग्रेडेशन, ऑप्शन सी जनरेशन, ऑप्शन डी डेवलपमेंट। The correct answer is option C, generation. The next question is IBM 7090 was developed in dash generation of computer. IBM 7090 को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी में विकसित किया गया था। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। The correct answer is option B, second generation. The next question is when was the vacuum tube is invented? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1904 and option D 1920. The correct answer is option C, 1904. The next question is which of the following IBM series was the most popular first generation computer? निम्नलिखित में से कौन सी IBM श्रृंखला सबसे लोकप्रिय प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था? ऑप्शन ए IBM 650, ऑप्शन बी IBM 360, ऑप्शन सी IBM 1130 and option D IBM 2700. A correct answer is option A, IBM 650. The next question is operating system was developed from which generation? ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी से हुआ था? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन and option D fourth generation. The correct answer is option C, third generation. The next question is which of the following statements are not true for the first generation computers? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए they are about the size of room, option B they consume more power and generate more heat, option C they are made up of semiconductor transistors and option D they often fail to operate. The correct answer is option C, they are made up of semiconductor transistors. The next question is which of the following statement is not correct for the second generation of computers? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए they use transistors as the switching device, option B microprocessors were developed during the second generation, option C magnetic core memory was used and option D they consume low power as compared to the first generation computers. The correct answer is option B, microprocessors were
developed during the second generation. The next question is, which of the following statements were not true about the fourth generation of computers? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं था? ऑप्शन ए, इंट्रोडक्शन ऑफ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ऑप्शन बी, माइक्रोप्रोसेसर्स बेस्ड PC introduced. Option C, object oriented programming, and option D, none of these. The correct answer is option D, none of these. The next question is, which of the following is the first programming language? निम्नलिखित में से कौन सी पहली प्रोग्रामिंग भाषा है? ऑप्शन ए, कोबोल. ऑप्शन बी, पास्कल. ऑप्शन सी, फोर्ट्रन. ऑप्शन डी, बेसिक. The correct answer is option C, Fortran. The next question is, who invented the vacuum tube computer? वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग. ऑप्शन बी, फेडरिको फैगिन. ऑप्शन सी, जैक किल्बे. या ऑप्शन डी, विलियम शॉकले. A correct answer is option A, John Ambrose Fleming. The next question is, who invented the transistor computer? ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, जैक किल्बे एंड रॉबर्ट नॉयसी. ऑप्शन बी, फेडरिको फैगिन एंड मासातोशी शिमा. ऑप्शन बी, फेडरिको फैगिन, स्टेनले मेजर एंड मासातोशी शिमा. ऑप्शन डी, विलियम शॉकले, जॉन ब्राडीन एंड वाल्टर ब्राटेन. The correct answer is option D, William Shockley, John Bradeen and Walter Brattain. The next question is, who invented the integrated circuits? इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, मैरिसन, हॉफ एंड स्टेनले मेजर. ऑप्शन बी, फेडरिको फैगिन एंड मासातोशी शिमा. ऑप्शन सी, जैक किल्बे एंड रॉबर्ट नॉयसी. एंड ऑप्शन डी, फेडरिको फैगिन एंड मैरिसन हॉफ. The correct answer is option C, Jack Kilby and Robert Noisy. The next question is, the microprocessor was designed by a team consisted of dash. माइक्रोप्रोसेसर को डैश से मिलकर बनी एक टीम द्वारा डिजाइन किया गया था. ऑप्शन ए, फेडरिको फैगिन एंड मैरिसन हॉफ. ऑप्शन बी, मैरिसन हॉफ एंड स्टेनले मेजर. ऑप्शन सी, फेडरिको फैगिन, स्टेनले मेजर एंड मासातोशी शिमा. एंड ऑप्शन डी, फेडरिको फैगिन, मैरिसन हॉफ, स्टेनले मेजर एंड मासातोशी शिमा. The correct answer is option D, Federico Fagin, Maricin Hoff, Stanley Maser and Masatoshi Shima. The next question is, the first commercially available microprocessor was the dash. पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रोप्रोसेसर डैश था. ऑप्शन ए, इंटेल 1001. ऑप्शन बी, इंटेल 2002. ऑप्शन सी, इंटेल 3003 and option D, Intel 4004. The correct answer is option D, Intel 4004. The next question is, the first commercially produced microprocessor was the Intel 4004, released as a single MOS LSI chip in dash. पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित माइक्रोप्रोसेसर Intel 4004 था, जिसे डैश में
एकल MOSLSI चिप के रूप में जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1971 and option D 1972. The correct answer is option C 1971. The next question is, from which generation computers the printers were used? प्रिंटर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से किया जाता था? ऑप्शन ए सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन एंड ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन. The correct answer is option A, second generation. The next question is, in which generation batch processing was mainly used? मुख्य रूप से किस पीढ़ी में बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन एंड ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन. The next question is, the processing speed of second generation computers was dash. दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग गति डैश थी. ऑप्शन ए मिली सेकेंड्स, ऑप्शन बी माइक्रो सेकेंड्स, ऑप्शन सी नैनो सेकेंड्स एंड ऑप्शन डी पिको सेकेंड्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी माइक्रो सेकेंड्स. The next question is, most important advantage of an integrated circuit is dash. इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण लाभ डैश है. ऑप्शन ए इट्स इजी रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्किट फेलियर, ऑप्शन बी इट्स लोअर पावर कंजम्पशन, ऑप्शन सी इट्स रिड्यूस्ड कॉस्ट, ऑप्शन डी इट्स एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी. The correct answer is option D, it's extremely high reliability. The next question is, the operating speed of third generation computer was dash. तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की ऑपरेटिंग गति डैश थी. ऑप्शन ए मिली सेकेंड्स, ऑप्शन बी माइक्रो सेकेंड्स, ऑप्शन सी नैनो सेकेंड्स and option D picoseconds. The correct answer is option C nanoseconds. The next question is, the operating speed of fourth generation computer was dash. चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की ऑपरेटिंग गति डैश थी. ऑप्शन ए मिली सेकेंड्स, ऑप्शन बी माइक्रो सेकेंड्स, ऑप्शन सी नैनो सेकेंड्स and option D picoseconds. The correct answer is option D picoseconds. The next question is, which generation of computer is still under development? कंप्यूटर की किस पीढ़ी का अभी विकास हो रहा है? ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन एंड ऑप्शन डी sixth generation. The correct answer is option C, fifth generation. The next question is, in which generation of computer that used CD-ROM of the first time? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पहली बार CD-ROM का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए सेकंड जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, option C fourth generation and option D fifth generation. The correct answer is option D fifth generation. The next question is, what difference does the fifth generation computer have from other generation computers? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या अंतर है? ऑप्शन ए साइंटिफिक कोड, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
option D, all of these? The correct answer is option B, technological advancement. The next question is, in latest generation computers, the instructions are executed. नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों को निष्पादित किया जाता है। ऑप्शन ए, पैरेलल ओनली, ऑप्शन बी, सीक्वेंशियल ओनली, ऑप्शन सी, बोथ पैरेलल एंड सीक्वेंशियल, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ पैरेलल एंड सीक्वेंशियल। The next question is, the first computers were programmed using dash. पहले कंप्यूटरों को डैश का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। ऑप्शन ए, असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी, सोर्स कोड, एंड ऑप्शन डी, हाई लेवल लैंग्वेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। The next question is, the IBM 1401 computer is used in dash. IBM 1401 कंप्यूटर का उपयोग डैश में किया जाता है। ऑप्शन ए, बिजनेस फील्ड, ऑप्शन बी, साइंटिफिक फील्ड, ऑप्शन सी, साइंटिफिक एंड बिजनेस फील्ड, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिजनेस फील्ड। The next question is, a microprocessor chip used in a PC system. PC सिस्टम में प्रयुक्त एक माइक्रोप्रोसेसर चिप। ऑप्शन ए, almost always operates on by bits of data at a time. Option B, is the only chip found in most PC models. Option C, performs the arithmetic logic and control functions. And option D, none of these. The correct answer is option C, performs the arithmetic logic and control functions. Dear friends, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के सेकंड पार्ट में हमने 79 में से 56 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट्स में कवर करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, आपको ये MCQ सीरीज कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। सो डियर फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।